Hey guys, welcome to Gradeup and welcome to the Gradeup 365 current affairs for your EPFO exam. Guys, this series, you know that it's already started some time ago, and this class is going to be my first class. So otherwise, you see, it's not a new series, but yes, of course, this is going to be my first class, which is part 1. All right, so I welcome you all to Gradeup and I wish you all a very good afternoon once again. So guys, let's take up the questions, the topics one by one. We'll have a series of topics today. We'll be discussing them, and all of them, they are very relevant for your exam, that is the prelims for EPFO. All right, and those of you who are preparing for civil services, this would be relevant to you as well. So guys, this is about me. Before proceeding, I am Shailender Singh, history and NCERT expert with Gradeup, and I also teach current affairs over here. I am an MBA from Symbiosis Institute of Management Studies, Pune, with corporate work experience of more than 4 years in managerial capacity. For the last 1.5 years, due to my passion for teaching, I have been mentoring and tutoring civil services exam aspirants as well as EPFO aspirants. So guys, this is the first topic that we are going to do. Art and culture से है question topic, that is Zardozi art. So let's see why in the news. The lockdown has left many Zardozi artists with mounting losses and joblessness with no customers even during the wedding season. That means ये जो art है इंडिया का बहुत ancient art है Zardozi art, that is witnessing losses first because of demonetization. So you see, over the last couple of years this has been witnessing bad times. पहले demonetization हो गया, उसके बाद GST हुआ, and then we have the COVID-19 pandemic, and the people who are working in this sector, they are not very big see the employers. These are like small artists and artisans who are engaged in this, and this basically unorganized industry. This is not very organized industry, and as such कुछ भी इस तरीके का अनफोर्सीन इवेंट होता है कोविड डिमोनेटाइजेशन टाइप का, तो इनकी लाइवलीहुड को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है. सो दिस इज समथिंग अबाउट जरदोजी आर्ट. सो द वेरी basic question that emerges in the mind is, what is Zardozi art that we are talking about? So it is a world-renowned textile embroidery which is an art patronized by the Mughals. So you see that this has got a legacy that involves weaving metallic threads on fabric to create intricate patterns. तो इसमें क्या होता है, जो फैब्रिक है, फॉर एग्जाम्पल सिल्क है, सेटिन हो गया या मसलिन वगैरह है, इसमें metallic threads, so threads made of metal, for example threads made of gold, threads made of silver, उससे weave किया जाता है और patterns बनाए जाते हैं. You can see in this particular picture that these are the gold threads that are woven into some textile, whatever the textile be. In the case, it looks like a velvet textile, but it could be silk also, it could be muslin, whatever the nature of the textile be. So this is the sort of design, the patterns that are created. This is known as Zardozi art. So this Zardozi word comes from the Persian word zar. Zar means gold. Zar means gold, मतलब सोना, and dozi means the art of sewing. बुनाई का काम होता है, सिलाई बुनाई का. So this is the Persian word, Persian origin of this particular word. But इंडिया में बहुत पुराना ये आर्ट है. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम से, विच बिकम्स रियली वेरी ओल्ड. ऋग्वेदिक टाइम्स, यू नो दैट दिस पीरियड एग्जिस्टेड बिटवीन 1500 BC से लेकर 1000 BC तक. ये जो पीरियड चला, ऋग्वेदिक पीरियड, एंड उसी टाइम से हमको इंडिकेशंस मिलते हैं, साइंस मिलते हैं कि जरदोजी, ये जो स्टाइल है एम्ब्रॉयडरी का, कढ़ाई का, उस टाइम से ही इंडिया में प्रेवलेंट है. And later on it flourished even more. It gained more sophistication during the Mughal times, especially it was patronized by Akbar, and during the times of Aurangzeb and after him actually it declined. जो art है ये decline हो गया उसके बाद, after the death of Aurangzeb,
एंड उसके बाद तो ब्रिटिश आ गए इंडिया में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा कि किस तरीके से चीप मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूके से इंडिया में इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट एंड अदरवाइज ऑल्सो ड्यू टू सम इनहेरेंट फैक्टर्स दिस आर्ट फॉर्म डिक्लाइंड। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 आजादी के बाद से दोबारा से ये फ्लरिश करने लगा है, एंड इन सम पॉकेट्स स्पेशली इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ पे आज की तारीख में भी बहुत अच्छे से ये जो कला है ये पॉपुलर है। एंड द सम ऑफ द स्टेट्स दैट यू कैन सी, द डिस्ट्रिक्ट्स यू कैन सी इज लखनऊ जरदोजी विच हैज गॉट द जीआई टैग इन 2013। आप लोगों को पता होगा जीआई टैग क्या होता है। बेसिकली इट्स अ टैग ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट अ पर्टिकुलर आइटम बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया विच मेक्स इट स्टैंड आउट। आपको पता चलता है कि जीआई अगर टैग मिला हुआ है तो ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस भी हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, एज इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है। अदरवाइज यू सी नेचुरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी टी, इट कुड बी पेपर, इट कुड बी चिली, XYZ वट एवर, मैंगो एटसेट्रा, इन सबको जीआई टैग में दिया जाता है। और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है इंडिया में। प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी ने सीएसई में पूछा हुआ है, एंड देयर इज अ गुड चांस कि ईपीएफओ में भी पूछ सकता है जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। द लेटेस्ट वन जो सबसे रिसेंट एडिशंस हैं। एज फॉर दिस जरदोजी प्रोडक्ट गाइज, दे आर मैन्युफैक्चर्ड नॉट ओनली इन लखनऊ बट सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल बाराबांकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, अमेठी। आपको पता होगा रायबरेली और अमेठी तो बहुत फेमस है, अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसीज सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स वेर इन दे आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज द जीआई टैग होल्डर्स। सो इवन दो दे आर नॉट लखनऊ बट इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ऑलराइट, शशि यू कैन चेक आउट ऑन गूगल और आपको मिल जाएगा। देयर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट बाय द वे, एंड सिंस दैट्स नॉट पॉसिबल टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एंड यू विल जस्ट रियलाइज व्हेन यू check it out on Google, you will have a lot of material regarding that. So just check out for the latest GI tag products also and otherwise also. So आप ना हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का प्रोडक्ट है और इसके बारे में यूनिक चीज क्या है। So वो अगर आपको पता चल जाएगा, so you'll have a very good understanding not only about GI tag but आपको आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून सानू, सौम्या, श्रेया, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ग्रेडअप, श्वेता एंड अनुवा। ओके, so let's move on to the next topic guys, which is National Mission for Manuscripts, NMM, Rashtriya Pandulipi Mission. So why in news? Recently the first set of 5 volumes of Mongolian Kanju has been published under the National Mission for Manuscripts. तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको you see नोटिस करनी है। एक तो है मंगोलियन कांजू, दैट इज द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पता होना चाहिए, और जो दूसरी चीज है वो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, NMM. ऑलराइट, एज फॉर दिस वन द फर्स्ट विच इज रिटन ओवर हियर, मंगोलियन कांजू, दिस इज मंगोलियन कांजू, दीज आर द मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपि हैं, 108 इन नंबर, 108 इन नंबर। यू कैन सी फ्रॉम द मोटिव्स, फ्रॉम द इमेजेस यहाँ पे दैट दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। यू कैन सी it's not very clear, but जो भी आपको दिख रहा हो, so you can infer from this that this is related to Buddhist religion. All right, so first let's talk about what is this national mission for manuscripts, और उसके बाद देखते हैं कि ये बुद्धिस्ट जो कांजू है, मंगोलियन कांजू है, ये क्या चीज है। All right, so as for the national mission for manuscripts guys, it was launched in February 2003 by the Ministry of Tourism and Culture with the mandate of documenting, conserving and disseminating the knowledge preserved in the manuscripts. So जितने भी manuscripts हैं उनको डिजिटाइज करेंगे, उनको स्टोर करेंगे और उनको
एक्सेसिबल बनाया जाएगा, बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है मैन्युस्क्रिप्ट, आई होप दैट यू नो व्हाट आर manuscripts. Basically they are handwritten copies of important texts, the old texts, the ancient texts, handwritten ones. पहले के ज़माने में कोई यूसी पेपर प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं हुआ करती थी, सो जितने भी जो बुक्स हैं वो हाथ से ही लिखना पड़ता था, कॉपी करना पड़ता था, एंड दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. दे आर वेरी वैल्यूएबल. यू सी दे वर रिटन ऑन पेपर, दे वर रिटन ऑन bark, they were written bark as in भोजपत्र जिसको बोलते हैं, birch bark, birch bark जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में भोजपत्र जिसको बोलते हैं. The manuscripts were written on, let's say, copper plates और ताम्रपत्र. They were written on palm leaves, ताड़पत्र, right? So अलग अलग तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट से मटेरियल कुछ भी हो, अल्टीमेटली दे वर रिटन बाय हैंड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज रिटन बाय हैंड. तो गवर्नमेंट का ये एंडेवर है कि इंडिया में बहुत सारा अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, अनडॉक्यूमेंटेड पांडुलिपियां हैं, तो उनको इस तरीके से एक मिशन चलाया जाए जिसमें सारा का सारा जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट है एक जगह स्टोर हो जाए, उसको डिजिटाइज किया जाए डिजिटल फॉर्म में, एंड उसको डिसेमिनेट किया जाए, उसको संरक्षण किया जाए और उसको प्रसारित किया जाए, प्रचार किया जाए, उसका प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को पता चले, जो रिसर्चर्स हैं उनको एक्सेस मिले उससे, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, और अदरवाइज ऑल्सो जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि हमारा किस तरीके का लेगेसी है आर्ट एंड कल्चर का, सिर्फ अपने देश का ही नहीं बाकी देशों का. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मंगोलियन कांजू, ये मंगोलिया से बिलोंग करता है, बट अल्टीमेटली दिस इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, चाहे इंडियन कल्चर चाहे ह्यूमैनिटी का कल्चर. ऑलराइट, okay, so these are the objectives guys, objectives of this particular mission. Objectives of the mission are to publish rare and unpublished manuscripts so that the knowledge enshrined in them is spread to researchers, scholars and public at large. Now let's talk about what this Mongolian Kanjo is. So this Mongolian Kanjo is basically the Buddhist canonical literature. That is the Buddhist religious literature है मंगोलिया का, सबसे जो important है Buddhist literature, that is said to be this Mongolian Kanjur that we are talking about. And Kanjur का मतलब होता है the proper orders. Buddhist Lord Buddha के जितने भी orders हैं, जितने भी उनके pure form में जो sermons हैं, जो इनके injunctions हैं, वो सब यहाँ पे contained है Mongolian Kanjur में, and they are 108 volumes, and they are considered to be the most sacred of the text in Buddhist tradition in Mongolia. मंगोलिया में सबसे ज्यादा वो सीक्रेट कंसिडर किया जाता है. मंगोलिया, बाय द वे, यू वुड नो वेयर इज द लोकेशन, राइट? आप लोगों को पता होगा मंगोलिया का लोकेशन क्या है. अगर आप लोगों को नहीं पता तो पता होना चाहिए कहां पे लोकेशन है. अबव चाइना एंड साउथ ऑफ रशिया. कैन यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कैन यू जस्ट लेट मी नो इन द चैट ओवर हियर. Yes, Nandini, I can see. Yes, Nandini, Tabassum. Okay, so yes, you guys are seeing through the YouTube chat. Fantastic. Glad to see you back, Nandini and Tabassum also. So neighboring countries आपको पता होना चाहिए, guys. Yes. So that is China and Russia. So China in the south and Russia in the north. Kazakhstan is also very nearby, and that is why, guys, some of the students, they tend to believe that Kazakhstan is also a neighboring country, but the fact is that Kazakhstan is not a neighboring country because 37 kilometers का distance है Mongolia का. And so if this is China, this is Mongolia, and this is Russia on top. Russia, Mongolia and China. कजाकिस्तान यहाँ पे है, बट एक्चुअली ये चाइना ने घेरा हुआ है, तो 37 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बिटवीन मंगोलिया एंड कजाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद कजाकिस्तान.
So this is also something that you should know. World geography से question आ सकता है. Now you know the location of Mongolia. Also, Mongolia का जो majority religion है guys, that is Buddhist religion. It is Buddhism which is the majority religion. That is 53% जो लोग हैं मंगोलिया में बुद्धिस्ट हैं, अपने को डिक्लेयर किया हुआ है एज पर सेंसस. एंड देयर इज अ गुड पोर्शन ऑफ नॉन बिलीवर्स ऑल्सो हु डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन. 30-35% जो कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट मंगोलिया. सो उनपे जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, you know that India is the cradle of Buddhist religion, and from India it spread to the rest parts of the world like East Asia and Southeast Asia. India से तिब्बत में फैला Buddhism during the Pala dynasty, and Buddhism spread in Mongolia from Tibet in the 16th century. 16th century में टिबेटन बुद्धिज्म का फॉर्म मंगोलिया में पहुंचा, और वो उन्होंने अपने जो लोकल कुछ कल्चर्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं, उन्हीं पे अडॉप्ट करके दे हैव दिस बुद्धिज्म एज अ रिलीजन. सो उनके जो वर्क्स हैं, लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, दैट इज कॉल्ड मंगोलियन कांजूर, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द डिस्कशन. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक गाइज, विच इज हागिया सोफिया. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस हागिया सोफिया. व्हाई इन द न्यूज? Recently, Turkey's highest court allowed for the conversion of the nearly 1500-year-old Hagia Sophia from a museum into a mosque. So, Turkey की अदालत में जो चर्च था, बेसिकली पहले चर्च हुआ करता था, फिर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया in the 20th century, and eventually it has been converted now into a mosque in 2020. So, this development that we are talking about, कब की डेवलपमेंट है? ये 2020 की डेवलपमेंट है कि टर्की में इसको जो म्यूजियम था उसको you see it has been converted into a mosque. All right, so let's talk about the details. Overview of the history of Hagia Sophia. सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, then we will be talking about the rest of the things. Hagia Sophia, also called as the Church of the Holy Wisdom. सो यू सी इस तरीके से यूपीएससी और ईपीएफओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिंस दिस इज इन न्यूज, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन वेरियस वेज. यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन वेरियस वेज. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन डायरेक्टली आस्क यू एज टू वेयर इज हागिया सोफिया लोकेटेड. हागिया सोफिया विच वॉज इन न्यूज इन 2020, that is located where, in which particular country, and then naturally the answer should be Turkey. आपको पता होना चाहिए टर्की में है. अदरवाइज ऑल्सो दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसा पूछ सकता है कि चर्च ऑफ द होली विजडम विच वॉज इन न्यूज इन 2020, वेयर इज इट लोकेटेड, एंड इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ विच एम्पायर. कौन से एम्पायर के इतिहास से जुड़ा हुआ है. सो आपको पता होना चाहिए ऑटोमन एम्पायर के इतिहास से जुड़ा हुआ है और बीजेंटाइन एम्पायर के इतिहास से जुड़ा हुआ है. फर्स्ट इट वॉज बीजेंटाइन एम्पायर which was replaced by the Ottoman Empire. I hope that is clear to you. So there are various ways actually the questions can be formulated in the exam by the examiners. So it is also called as the Church of the Holy Wisdom or the Church of the Divine Wisdom, a cathedral built at Constantinople, now Istanbul, Turkey. So Constantinople, you know, it was one of the greatest cities during the medieval times, and it was second only to Rome. So one was Rome, one of the greatest places, cities in the world during those times, in the medieval times. And then we also have Constantinople, which was named after the Roman Emperor Constantine in the 6th century. So this particular Hagia Sophia we are talking about, it was constructed in the 6th century, that is 537 AD में इसको complete किया गया under the direction of Byzantine Emperor Justinian I. So Justinian I was an emperor, Byzantine emperor. इस time पे he was the ruler, and he was very much into culture. He was very fond of culture. He was very much fond of architecture and buildings, and that is the time he created this one of the beautiful buildings, most beautiful buildings in the entire planet today. So you can see a very very unique sort of architecture. इसमें आपको domes भी दिखेंगे. So this was the beginning of domes also. It was not a true dome as such, but start हो जाती है, शुरुआत हो जाती है इतने टाइम पहले. And the surprising thing is that अभी तक
by and large you see the building is intact. 1500 साल हो गए फिर भी देखो बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है. Can you see that? So it's like as good as new. All right. Okay, what further? After the Turkish conquest of Constantinople in 1453, Mehmed II had it repurposed as a mosque. So Mehmed II is also known as Mehmed the Conqueror. Excuse me. He is also known as Mehmed the Conqueror. Mehmed the Conqueror, because it was he who invaded the Byzantine Empire and he had it replaced with the Ottoman Empire. So 1453 में शुरुआत किस चीज की होती है? एक नए एम्पायर की होती है, that is called as Ottoman Empire. और आप लोगों को पता होगा जो Ottoman Empire है, it was in existence until the First World War. It was only after the end of the First World War that it was done away with, and we had the establishment of a secular country of Turkey. All right, so he had it repurposed as a mosque with the addition of some minarets, etc. Then in 1934, Turkish President Kemal Atatürk, he is like very famous in the history of Turkey, and there are like two very important figures, guys, in the history of Turkey who are widely respected by the Turks and even the Muslims in many parts of the world. One is Mehmed II, this person who conquered Constantinople and he laid the foundation of Ottoman Empire. एक तो इनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है टर्की में, और जो दूसरे पर्सन है इन द मॉडर्न टाइम्स, हिज नेम इज कमाल आतातुर्क, और कमाल पाशा भी बोलते हैं इनको, कमाल आतातुर्क भी बोलते हैं. आतातुर्क वॉज बेसिकली अ डेजिग्नेशन. Ataturk was basically the designation that he was granted, and it means the father of the Turks. So this is the designation because he was very instrumental in replacing the Ottoman Empire, in fighting against the foreign powers. Because First World War के बाद आपको पता होगा इंडियन कनेक्शन भी है, खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया that also arose because of this Ottoman connection. I hope you know some history. And it was during this time that he deposed the last of the caliph, and instead he laid the foundation of a secular the secular country of Turkey in 1923, and he wanted to secularize this building. So in 1934 it was done, and in 1935 it was converted into a museum. So 1935 से लेकर जब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया और अभी 2020 तक ये म्यूजियम ही था, but there this new government, by the way, which has been like this the president of Turkey, Erdogan, he's been there for quite some time. He wants to consolidate the power, और जो भी वहाँ पे you see internal politics चल रही है, more emphasis being given to Islam, and that is why in the same vein it has been converted into a mosque in 2020, which even the Supreme Court it has upheld in Turkey. So this is the development, which is a violation, which is a gross violation of UNESCO World Heritage Site status, because जो ये convention है, you see UNESCO's convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage 1972 में ये हुआ था convention. आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, राइट? यू वुड नो what are the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. और आपका जो होमवर्क है, आपको होमवर्क ये है रिलेटेड टू दिस, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी वुड हैव ओवर हियर. इंडिया में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उनके बेसिक्स भी पता होना चाहिए, यूनिक फीचर्स भी पता होना चाहिए. सो दिस कुड बी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट का डेजिग्नेशन है, इट कुड बी गिवन टू कल्चरल प्लेसेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल सम बिल्डिंग्स, एज इन द केस ऑफ दिस बिल्डिंग, इट हैड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग, एंड ऑल्सो नेचुरल प्लेसेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी some river, it could be desert or something like that. Landscape भी हो सकता है, or maybe some hill station. All right. So अब उसको convert कर दिया गया म्यूजियम से मॉस्क में, and that is why it has been considered as a violation.
एंड लेट्स सी व्हाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन डज फर्दर, क्या एक्शन लिया जाता है इसके अगेंस्ट में. दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. यस नंदिनी, 2 homework GI tags and UNESCO site, both of them they are like very important. Both of them are very important. तो उसके जो डिटेल्स हैं, कौन कौन से साइट्स हैं, कौन कौन से GI टैग्स हैं, और यहाँ पे साइट्स हो गई, आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड ऑल्सो नो विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड. एंड यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू नो ऑलरेडी विच कंट्री हैज गॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड. Okay guys, so let's come to the next topic, which is तंगम्स. Why in news? Let's see. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पुस्तक जारी की है जिसका शीर्षक तंगमास, तो हिंदी में तंगमास, इंग्लिश में तंगम्स. ऑलराइट, सो तंगम्स अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्त प्राय समूहों का मानव जाति संबंधी भाषाई अध्ययन है. सो दिस इज an ethno-linguistic study of the critically endangered group of Arunachal Pradesh. Since it is critically endangered, you should know more about this particular tribe that we are talking about, whose name is Tangam. So you can see the representative image of Tangam tribe over here. All right, so let's try to find out more about who are the Tangams, कहाँ रहते हैं, कौन लोग हैं, और क्यों ये लोग endangered हैं. All right. Yes, Italy is right, absolutely. Abhay and Pragya, highest number of world heritage sites. Fantastic. इतना छोटा सा country है, but you see it has got the highest number of these sites in the world, which itself is like very marvelous. इससे पता चलता है किस country में कितना heritage है, कितना cultural एक legacy है, isn't it? So who are the Tangams? The Tangams are a little known community within the larger Adi tribe of Arunachal Pradesh. You know guys, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे जनजाति रहती हैं. There are like tens and hundreds of such tribes because it's a hotbed of ethnic diversity and linguistic diversity, the northeastern part of the country. And Arunachal Pradesh is once a state जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, कई सारे मेजर ट्राइब्स हैं, माइनर ट्राइब्स हैं. And there are tribes like you see Adi and Nishi and so many tribes, Apatani etc. And उसमें एक tribe है Adi tribe. So इसका within this larger Adi tribe there is a particular linguistic group of Tangams that reside in the hamlet of Kaging in Upper Siang districts. Some circle, so this is not important. So आपको ये पता होना चाहिए geographical location कहाँ पे है, Upper Siang district. So let's check out where is Upper Siang district. You see this is the Upper Siang district over here. तो यहाँ पे ये लोग जो tribe है जिसकी हम बात कर रहे हैं critically endangered, that is Tangam tribe. This is where they live. And if you have some basic idea about the location of Arunachal Pradesh, this would also help you guys. So you see Tawang is this place over here जहाँ पे famous Tawang monastery है. China in 1962 में, you know, they had captured this place, and then there are these places, so you can have some idea about the location, and these are the districts that border Myanmar or Burma. All right, so Tangam community, which has reportedly 253 speakers, they are concentrated in one small hamlet. So just 253 speakers, 253 वक्ता रह गए हैं जो इस भाषा को बोल सकते हैं. As per the UNESCO World Atlas of Endangered Languages 2009, Tangam that belongs to the Tani group. So Tangam is not a tribe as such. So Tangam is a language. Tangam एक भाषा है, और जो ट्राइब है, आदि ट्राइब का जो एक सब सेक्ट है, उसमें सब पार्ट है, उसमें ये तंगम भाषा बोलते हैं. बट इंडेंजर्ड इसलिए है कि बहुत कम लोग रह गए हैं. और सिर्फ गाइस सिर्फ यहाँ पे एक लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में ऐसी कई सारी, देयर आर टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ सच लैंग्वेजेस दैट आर very endangered, and that happens not only that is true not only in the case of northeast India but other parts of the country, central tribal belt, the Himalayan states. So कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं. And
the reason why the languages are becoming endangered in Northeast or especially Arunachal Pradesh is because of the intrusion of some other languages. For example, English का काफी prevalence है वहाँ पे. Over the last couple of decades it's become like very popular amongst the youth, especially who are living in the cities. Then Assamese is also gaining ground. Hindi in the Arunachal style, अरुणाचली हिंदी जिसको बोलते हैं, वहां पे भी काफी पॉपुलर हो रही है. और इसकी वजह से जो बाकी जो इनकी ये ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं वो endangered हो रही हैं, एंड सम ऑफ द लैंग्वेजेस दे हैव ऑलरेडी गॉट एक्सटिंक्ट or are about to get extinct. So this is the change in the attitude of the youth actually, which is leading to these languages getting on the verge of being critically endangered, and ultimately they might be lost to India forever, which is a great loss to India, by the way. Isn't it a loss? Linguistic loss, loss of diversity of culture of India. So this is what this news is all about. So Shashi, it's just the preference attitude of the youth. So government also can't do much, because you see there are so many languages that are spoken over there. छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं. So कोई एक स्टेट लैंग्वेज नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट बंगाली, विच इज लाइक द स्टेट लैंग्वेज ऑल्सो. इन महाराष्ट्र इज मराठी, इन गुजरात से गुजराती, इन तमिलनाडु इज तमिल. इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द स्पीकर्स बिलोंग टू वन पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप. प्रॉब्लम ये है नॉर्थ ईस्ट में कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, इनकी अलग अलग एथनिसिटी हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. सम हैव very small numbers, 200, 500,000. Some have somewhat bigger number, 10,000, 15,000, but nonetheless they are not very large, and as such they can't open schools which will say that we have this Arunachali language, because there are so many languages. I hope you get the point why it is becoming very difficult. Plus the youth is also more inclined towards learning languages like what I'm talking about right now in English and हिंदी ऑल्सो. हिंदी भी अच्छे तरीके से वहां पे ग्राउंड गेन कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई द यूथ इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज लैंग्वेजेस दैट कैन हैव देम एक्सेस टू जॉब्स. Yes, Shashi, absolutely. It's a very fair question, and I hope that you got the hang of what is the reason why they are not teaching others. Let's come to the next topic, guys, which is Padmanabhaswamy temple. This is a very long name, by the way. I hope you can read it in English also, in Hindi also. Just like Tiruvananthapuram, so long sort of word. So this temple, in a recent judgment, let's see why in news, the Supreme Court upheld the Shibet rights of Travancore royal family. So you know there is a Travancore royal family that is like being a part of Travancore, which is the southern part of Kerala. So the upper part is like Malabar, and then the southern part is Travancore, which was a state also, state of Travancore before independence. So it is this royal family that is we are talking about over here in the administration of the temple in Kerala. All right. अब प्रॉब्लम ये है कि जो जजमेंट आया है 2011 में, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट कैन ओवरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन from the royal family with regard to this temple. It's a very famous temple. We'll be talking more about this temple, don't worry. All right. So इस temple का administration state government ले सकती है, but that was challenged by the royal family in the court, and then finally this is the recent judgment that the Shibet rights of the Travancore royal family would be intact. They won't be impinged upon. All right. So let's see what is the Shibet. Question में, like this is very very natural for you to understand. In the exam they can ask you what you understand by Shibet. Shibet से आप क्या समझते हैं, and then you will be getting options. आपको right tick करना पड़ेगा. So let's try to understand who is a Shibet. It is any person who serves and supports the deity and works as a manager of the debutar property. कोई भी व्यक्ति है जो देवता की सेवा और समर्थन करता है, excuse me, और संपत्ति के प्रबंधक के रूप में काम करता है. That means the person would be representing the deity,
the person would be a personal manager of the deity. जो भी देवता हैं, जो भी भगवान हैं, जो भी आइडल हैं, इनके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजर. सो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द टेम्पल एंड ही वुड बी मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्पल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड. सो ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पल में जो गॉड है, इनकी सारी प्रॉपर्टी है भगवान की, अल्टीमेटली सब प्रॉपर्टी है, राइट? बोलते हैं भगवान का ही दिया हुआ है, अल्लाह का, ईश्वर का दिया हुआ है. सो भगवान की जितनी भी प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली नोशनली क्या है, गॉड को बिलोंग करती है, बट देयर हैज टू बी somebody, some person to manage that property. So on behalf of the god, it is this person Shibet who is managing the property of the temple, and he is the custodian of the property. So he can talk on behalf of the god, right? And he has the power to manage all the affairs of the deity. That is जो डे टू डे अफेयर्स हैं, किस तरीके से मैनेज करना है टेम्पल में, और फेस्टिवल्स वगैरह है, नॉर्मल डे टू डे यू सी जो चोर्स, नॉर्मल चोर्स, हाउ दे हैव टू बी मैनेज, इट इज द शीबेट हु विल बी डूइंग दैट. और इस पर्टिकुलर केस में शीबेट कौन है? शीबेट इज द ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली, द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रैवनकोर. So this is about Padmanabh Swami temple, a Hindu temple located in Thiruvananthapuram, Kerala. So Thiruvananthapuram, Trivandrum, you know that this is the capital of Kerala, and here we have this very beautiful temple. You can see that this is a very marvelous temple, and that's built in this combination of Chera style, the Kerala style, and the Dravidian architecture. And this temple is dedicated to Lord Vishnu, Ananta, Lord Vishnu, or Lord, who is also known as Lord Ananta, Ananta. And you would know perhaps that Thiruvananthapuram is named after this temple. Thiruvananthapuram is named after this temple. Lord Ananta का temple है, Lord Vishnu का temple है, and Thiruvananthapuram in Malayalam means city of Lord Ananta or Lord Vishnu. So now you know another very sort of new thing, that Thiruvananthapuram is named after this particular temple, that is Lord Ananta or Lord Vishnu. All right. Yes, Bibhash, ये lecture recorded form में भी मिलेगा आपको. After the class there would be recorded video on the app and on YouTube also, so you can have access to it. By the way, इस temple में जो बहुत property है, apparently for thousands of years a lot of wealth was accumulated in this temple, and that is why the Supreme Court had directed to open the gates, to open the vaults, the chambers, and it is said that this is the richest temple in the world. So much of property has got accumulated, gold, silver, diamond, etc. And then there is some controversy regarding the control of the property. The temple is built in an intricate fusion of the Chera style. So Chera style is the typical Kerala style. You would have seen those slanting roofs, right? So that is like the typical Chera or Kerala style. And a lot of these houses and temples and beautiful architecture, that is the Chera style. I personally like it like very much. And then the Dravidian style of architecture. So Dravidian style is the typical southern Indian style. So it's a lot of fusion. It's a fusion of the two styles. So Dravidian style is the typical, that the sort of pyramidal structure that you have, right? So which began during the reign of the Pallavas and culminated during the time of the Cholas, the imperial Cholas. So that is said to be the Dravidian style of architecture. So it's a combination of both of them, featuring high walls and the 16th century Gopura. The principal deity who is Vishnu is enshrined in the Ananta Shayan posture, the eternal yogic sleep on the serpent Adi Shesh. So the principal deity is Lord Vishnu, and he is enshrined in the Ananta Shayan posture on the serpent Adi Shesh, who is supposed to be the king of all snakes, Nag जिसको बोलते हैं. तो इनमें he is resting over here. All right. So you can see in Hindi also, those of you who are like more comfortable with Hindi and not in English. So this is like to
to make your job easier. Otherwise, generally क्या होता है, when I talk in English and the slides are also in English, a lot of students from Hindi medium background or who are going to attempt the paper Hindi, they have difficulty, and that is the reason why we have tried to simplify for you. And as you can see that the discussion is also partly in English and partly in Hindi. So guys, this was all for the day. Thank you so much for attending the lecture. At the end of the class, I have this very important announcement for you, which is the February Mela that we are organizing. It's a very short-term offer, and you can avail this. It's sort of a fantastic double bonanza for you, wherein the prices have been slashed by half. You can see the prices have been slashed by half, and the validities have been increased by the month that the base month is. So by twice the period that was available to you earlier. So 3 plus 3, 6 plus 3, 9 plus 9, and you can see the prices have also been slashed. So double validity at 50% off for a Gradeup Super subscription plan, which gives you unlimited access to all the structured courses, live courses, mock tests for both the exam categories, not only EPFO but CSE and vice versa. Alright, so you can speak to your counselors if you're interested on this particular number, and they will guide you through. They will have all your queries taken care of. So thank you so much guys. I'll see you in another class next time whenever the time is due. Thank you so much. Those of you who haven't had your lunch till now, it's like pretty late. I'm sure that you have had your lunch, so thank you so much. And those who haven't, please do that. All right, okay, so have a good day ahead guys. Take care. I'll see you next time. Have a good day. Bye bye.